औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से हम अपने सेशन का स्टार्ट जो है वो कर रहे हैं। जैसा कि आप तमाम ही लोगों की नॉलेज में है और ऑब्जर्वेशन के अंदर भी है कि जो इस तरह की पैंडमिक सिचुएशन आजकल मौजूद है पूरी दुनिया के अंदर, उस कंडीशन के अंदर उसने ना कि सिर्फ हमारी हेल्थ को जो है वो इफ़ेक्ट किया है, हमारी डेली रूटीन लाइफ को भी जो है वो बुरी तरह से मुतासर कर दिया। लॉकडाउन की सिचुएशन की वजह से लोग जो है वो घरों में आइसोलेट हो गए, खुद को बचा रहे हैं और अपने आप से दूसरों को भी जो है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस वायरस का स्प्रेड जो है वो कम से कम कर सकें। तो हर इंसान जो है वो इसी कोशिश में लगा हुआ है कि खुद भी महफूज रहे और अपने आप से दूसरों को भी जो है वो महफूज रखे। जिस तरह मैंने बात की कि हमारी लाइफ स्टाइल भी जो है वो चेंज हो गई है। पहले लोग जो है वो घरों से बाहर निकला करते थे, घूमने फिरने, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा होती थी। तो अब जो है वो ये सारी चीज़ें भी कम हो गई हैं, सनलाइट एक्सपोजर भी जो है वो कम हो गया है और फिजिकल एक्टिविटीज़ भी कम होने की वजह से हमारे मसल्स और हड्डियाँ भी जो है वो कमज़ोरी की तरफ जा रही हैं। तो इन्हीं तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने मदऊ किया है वेबिट के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर खालिद महमूद शाह साहब को, जो कि कंसल्टेंट आर्थोस्कोपिक एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन है और ये चेयरमैन भी हैं पाकिस्तान ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के इन आर्थोस्कोपी और ये हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट भी हैं इन अल खलीज। तो मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर साहब से कि वो अपनी प्रेजेंटेशन का जो है वो आगाज़ करें और हमारी ऑडियंस के साथ जो है अपना विटामिन डी डेफिशिएंसी एंड हेल्थ इम्पैक्ट और विटामिन डी जो कि लो हैंगिंग फ्रूट इन कोविड-19 उसके ऊपर जो है वो ऑडियंस के साथ डिस्कस करें। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। Thank you a lot for a nice preamble to the talk. I would like to take this opportunity to thank you and the organizers of Gets Pharma for this presentation. I believe this is an important topic considering the occurrence of pandemic of COVID-19 in Pakistan. And I would be discussing the effect of vitamin D deficiency on the health as well as its repercussions to the infection by COVID-19 virus. The presentation would include the vitamin D function. I'm sure most of us have already gone through the classical function of vitamin D, but there are other non-classical effects of vitamin D which would be discussed. We will talk about vitamin D deficiencies, causes of deficiency, then we'll come to COVID-19 pandemic and its relationship with the vitamin D. And lastly, we'll finish off with talking about the sources of vitamin D. As you all might be aware that vitamin D is a fat-soluble vitamin that is naturally present in some foods, while it is added to other as fortified vitamin D, such as in milk, butter, cereals, etc. And then vitamin D is also provided as dietary supplement in the form of tablets, drops, and injections. Vitamin D promotes calcium absorption in the gut, which is its main function. And through that effect, it maintains adequate serum calcium and phosphate concentrations, which you all know is necessary for normal mineralization of bone. That is, if we are deficient in vitamin D, then that would lead to less absorption of serum calcium and phosphate, and the mineralization of bone would be affected, which would result in rickets in the children and osteomalacia in adults. It is also needed for bone growth and bone remodeling by osteoblasts and osteoclasts.
These are the two important bone cells, and they have vitamin D receptors on them, and therefore vitamin D does affect their function by having effect on the receptors. If you go through the metabolism of vitamin D, the important point to realize is that when the skin is uncovered and is exposed to the sunlight, and sunlight has ultraviolet rays, specifically the B ones, they affect the 7-dehydrocholesterol present in the skin, and that is converted to pre-vitamin D3. This is an inert metabolite. This is carried through vitamin D binding proteins to the liver, where the first hydroxylation of vitamin D occurs, and 25 hydroxylated vitamin D is formed. This is then carried with the vitamin D binding protein to the kidneys, where in the proximal tubules, the second hydroxylation occurs, and the activated form of vitamin D, that is 125, effects on all the cells that have vitamin D receptors on them. So to wrap up, the vitamin D increases calcium absorption in calcium and phosphorus excretion, and it also has effect on bone calcification through the bone cells, that is osteoblasts and osteoclasts. And because when the level of vitamin D in serum increases, the parathyroid hormone secretion decreases. This is the feedback mechanism. And vice versa, if the vitamin D levels are decreased, then parathyroid hormone secretions are increased. If we look at the non-classical actions of vitamin D, it regulates apoptosis, which is the cell death. It has a very important function of modulating the immune responses, especially the susceptibility to infections. If a person has a decreased level of vitamin D, then the chances or susceptibility to infection in that person increases. Similarly, the autoimmune disorders do get aggravated in people who have less serum levels of vitamin D3. Examples are multiple sclerosis, type 1 diabetes mellitus, and rheumatoid arthritis. So if you look at that, then it is reasonable that we should be prescribing supplemental vitamin D to people who are suffering with these diseases, and also to people who are in the grip of infections. It does have effects in transplantation, and this is through its modulatory effect on the immune response. So after transplant surgery, it would be reasonable to give your patients supplemental vitamin D. It suppresses renin-angiotensin system. It stimulates insulin secretion. Again, this would be significant in people who are diabetic, because if they are deficient in vitamin D, then that disease could also be affected. It controls the neuromuscular function, and it is hypothesized that by this effect on the neuromuscular function, the old age people who are suffering with osteoporosis, their incidence of falls could be decreased by giving them a suitable amount of supplemental vitamin D. If you look at the mechanism of fracture healing, and
if you look at the different phases of fracture healing, the first week is the inflammatory phase. There, the increase in bone mineral protein is also mediated by vitamin D. Then in the week 2 to 3, the soft callus formation. In this phase, the endochondral bone formation occurs. And again, the chondrocytes, they have vitamin D receptors, which are positively affected. We go to the week 4 to 16, that's the hard callus formation stage. Again, there the function of osteoblasts is facilitated with the good serum levels of vitamin D. The last stage would be the remodeling stage of fracture. Here, both osteoblasts and osteoclasts are positively influenced with the vitamin D levels. And there is also a mechanism of cell-to-cell messaging between osteoblasts and osteoclasts, because remodeling phase, you need the resorption of the bone to occur so as the alignment of bone is maintained. The regulation of immune function by 1,25-dihydroxyvitamin D suppresses the adaptive immunity. Now, there are two types of immunity in a person. One is called the innate immunity, and the other one is the adaptive immunity. Simply speaking, innate immunity is that immunity which is a non-specific response of the person's defense mechanism to any infection, bacterial or viral. And the adaptive immunity is the learning from that previous infection by memory T cells, etc. And if a similar bacteria again infects the person, then this adaptive immunity also comes in force, and it tries to suppress that virus or bacteria. So these two immunity mechanisms are positively influenced by vitamin D, because the cells involved in these mechanisms are also known to have vitamin D receptors. So immune modulation is a therapeutic approach in which interventions can be achieved in auto-regulating processes of the defense system. All cells of the adaptive immune system, such as dendritic cells, monocytes, T cells, and beta cells, etc., are stimulated and are sensitive to calcitriol action, that is the active form of vitamin D3, 125 dihydroxyvitamin D3. So high level of vitamin D causes potent inhibition of dendritic cell maturation. This is the cell which is important in immunity of immune response of the person, and it leads to lower expression of major histocompatibility complexes. It downregulates the co-stimulatory molecules, and it lowers the production of pro-inflammatory cytokines. This inflammatory cytokines are being researched a lot these days with regard to COVID-19 pandemic, because one of the theories is that the damage that occurs to the lungs and the respiratory system is because of the hyper response of the inflammatory system. And if we somehow control that inflammatory response, we would be able to modulate the severity of the disease. And in order to do that, in severe cases of COVID-19 patients, recently there has been a report from UK
and they have recommended use of steroid dexamethasone, which would decrease the inflammatory storm or cytokine storm and have beneficial effect, because this inflammation of the lung leads to fibrosis of the lung, which ultimately affects the breathing of the patient. Macrophages are cells which are important in the innate immunity response, and these are the cells which are the defense against bacterial and viruses that enter the body. This diagram depicts the effect of 125 dihydroxyvitamin D3. It affects the monocytes and macrophages by increasing their proliferation. It decreases the maturation of the dendritic cells, and these dendritic cells also have cell-to-cell messaging. These are the cells which play a part between the innate immunity, that is monocytes, macrophages, and dendritic cells, and then by their messaging to the memory T cells, they are affecting the adaptive immunity. And these are all positively influenced by vitamin D3 active metabolite. So dendritic cells are immune cells that function as antigen presenting cells. They act as messengers between the innate and adaptive immunity. Vitamin D induced inhibition of interleukin 12 released by a dendritic cell has a profound effect on T lymphocyte differentiation by downregulating it. As a result, the following are achieved. That is, it promotes differentiation, and it has anti-proliferative effect on the T cells, principally T helper cell, and they suppress beta cell antibody production both directly and indirectly. These are the immune responses of the adaptive immunity part. Immune suppression, one of the most important modulatory action is its effect on regulatory T cells, which prevent the activation of peripheral autoreactive T cells. And vitamin D also promotes infection control by enhancing the phagocytic activity of macrophages and increases the activity of natural killer cells. So this is the function that would help in ameliorating the infective process, such as COVID-19 patients. Coming to the vitamin D deficiencies, vitamin D is divided, the level of vitamin D, that is serum 25 hydroxyvitamin D. This is the inactive metabolite, and we are able to assess this level in the serum. And instead of the active form, that is 125 dihydroxyvitamin D3, this is preferred because this is more stable. Whereas the active form, when the deficiency of vitamin D occurs, that level has to be maintained by the body, and parathyroid hormone secretes the hormones to increase conversion of serum 25 hydroxyvitamin D into serum into 125 dihydroxyvitamin D, and that changes the level of the active form. मतलब ये है कि अगर हम 25 हाइड्रोक्सीविटामिन डी को असेस करें और इसके लेवल को मेजर करें तो ये ज़्यादा स्टेबल रहता है बनिस्बत 125 एक्टिव फॉर्म वाले के। वो डेफिशिएंसी स्टेट्स में पैराथायराइड हार्मोन रिलीज की वजह से उसका लेवल चेंज होता रहता है।
जबकि ये लेवल स्टेबल रहेगा। और इसको अगर आप असेस करोगे तो फिर आप अपने पेशेंट को इन 4 में से किसी एक ग्रुप में डाल सकते हैं। ये ग्रुप्स क्या हैं? एक ग्रुप है जैसे डेफिशिएंसी ग्रुप कहते हैं। इस ग्रुप को क्लासिफाई करते हैं अगर उसका सीरम विटामिन नैनोमोल्स या 12 नैनोग्राम पर ml से कम हो। दूसरा ग्रुप है जिसे इनसफिशिएंसी ग्रुप कहलाता है। इसका लेवल मेजर किया जाए तो वो 30 से 50 नैनोमोल्स या 12 से 20 नैनोग्राम। ये 2 डिफरेंट मेजरमेंट्स हैं जो डिफरेंट लैब्स रिपोर्ट करती हैं। आप किसी एक को अगर याद कर लो तो दूसरे वाले को भी कैलकुलेट करना आसान है, क्योंकि 1 नैनोमोल पर लीटर जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू 0.4 nanogram per ml. So if you remember either of these figures, you can convert it to the other. तो अगर आसानी के लिए आप 20 नैनोग्राम ml समझ लें जो कि अपर लिमिट है इनसफिशिएंसी वाले ग्रुप की, तो फिर इससे नीचे जो भी ग्रुप जो भी लेवल होगा वो आइदर या फिर वो इनसफिशिएंसी में जाएगा जो कि लेस सेवियर फॉर्म है डेफिशिएंसी की। Any level that is more than 20 nanogram per ml would be considered adequate for bone and overall health of healthy individual. But studies have reported that a level that is more than 50 nanogram per ml would be classified as having some adverse effects. यानी ये एक तरह से ये हाई लेवल्स जो हैं ये डैमेजिंग हो जाएंगे। इफ वी कम टू द प्रेवलेंस ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी, पाकिस्तान में एक स्टडी की थी जायद मसूद एटाल ने, ये फैसलाबाद पंजाब मेडिकल कॉलेज वगैरह से इनका ताल्लुक था। इनके हिसाब से जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें ऑलमोस्ट 95% लोग जो हैं वो आइदर फॉल कर रहे थे डेफिशिएंट ग्रुप में या इनसफिशिएंट ग्रुप में। ओनली 4.5% वर इन द नॉर्मल ग्रुप दैट इज मोर देन 20 नैनोग्राम पर ml। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारी पॉपुलेशन पहले ही विटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार है। अब विटामिन डी डेफिशिएंसी के साइंस क्या होते हैं? जैसे अभी बात हुई कि बहुत से ऐसे सेल्स हैं जिनमें विटामिन डी का रिसेप्टर्स होता है जिसे वीडीआर कहते हैं। तो जहाँ जहाँ जिस सेल के अंदर वीडीआर होंगे, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो फिर उस एरिया को इफेक्ट करेगी। सबसे पहले जो बोन मेजर फंक्शन है विटामिन डी का, उसमें अगर डेफिशिएंसी हो तो रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया और लेटर स्टेज में ऑस्टियोपोरोसिस नज़र आती है। मसल्स में पेशेंट वुड कंप्लेन ऑफ एक्स एंड वीकनेस। ब्रेन में हेडेक की कंप्लेंट करेगा, हेयर लॉस भी होगा एंड देन हार्ट डिजीजेस वुड आल्सो बी अ सिम्पटम। ऑस्टियोपोरोसिस अब काफ़ी कॉमन होती जा रही है पाकिस्तान में। उसकी एक वजह यह है कि हमारी डेमोग्राफी चेंज हो रही है। पहले जो हमारा एवरेज एज थी वो 45-50 ईयर्स होती थी, अब एवरेज एज जो है वो 60 ईयर्स तक चली गई है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन एज करेगी तो ऑस्टियोपोरोसिस के केसेस बढ़ते जाएंगे। ये बेसिकली हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, जिसमें कैल्शियम की लीचिंग आउट हो जाती है
when in females मेनोपॉज के बाद हार्मोनल चेंजेस आते हैं तो ज़्यादा कैल्शियम लीच आउट करता है बोन में से, उसकी वजह से बोन की जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाती, और कोई छोटा मोटा ट्रॉमा भी हो तो उससे भी बोन फ्रैक्चर करती है। रिकेट्स जो है ये यंगर एज ग्रुप में विटामिन डी डेफिशिएंसी से नज़र आता है, और ये बेसिकली वो बच्चे जिनकी बोन्स डिफॉर्म्ड हों या फ्लेयरिंग ऑफ द बोन एंड्स नज़र आए उनको रिकेट्स कहते हैं। और प्राइमरीली दिस इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, एंड इफ you replenish that deficiency with the appropriate dosage of vitamin D, these children, they respond very well to it and they improve. और साइंस क्या हो सकते हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी के? चिल्ड्रन में in addition to causing rickets, vitamin D deficiency has been linked to respiratory infections. वो जैसे अभी मैंने बात की कि इम्यून रिस्पॉन्स के ऊपर भी विटामिन डी का इफेक्ट है। अगर विटामिन डी कम होगी तो वो बेनिफिशियल इफेक्ट है मैक्रोफेजेस पे और डेंड्रिटिक वगैरह सेल्स पे, तो वो नहीं होगा। न्यूट्रोफिल्स पे भी इफेक्ट इनका बेनिफिशियल होता है, तो उसमें पे लाइक्लीहुड इन्फेक्शन की बढ़ जाएगी। तो अगर हम एज अ रूटीन हर इन्फेक्टेड पेशेंट का जो विटामिन डी लेवल है उसको सप्लीमेंट करें तो वो उसकी जो डिफेंस है इन्फेक्शन का वो बेहतर होता जाएगा। Pneumonia is a severe form of acute lower respiratory tract infection and is one of the leading cause of death in children worldwide. अब क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी के? एक तो मेजर रीज़न है रिड्यूस स्किन सिंथेसिस, जिसमें लैक ऑफ सन एक्सपोजर, यूज़ ऑफ सनस्क्रीन, स्किन हाइपरपिगमेंटेशन, रेज, स्किन ग्राफ्ट्स और बर्न्स, सीज़न पे भी डिपेंड करता है, ऑल्टीट्यूड पे भी डिपेंड करता है। अब हालांकि हमारे मुल्क में ये भी अल्लाह की नेमत है कि धूप काफ़ी होती, मगर उसके बावजूद हमारे यहाँ विटामिन डी लेवल्स जैसे कि वो जाहिद मसूद की स्टडी ने बताया कम है। तो उसका एक रीज़न ये है कि हम धूप से भागते हैं। हमारे यहाँ फिर हमारे कुछ कल्चरल नॉर्म्स भी ऐसे हैं, ख्वातीन जो पर्दा करती हैं उनकी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सन एक्सपोजर के लिए अनकवर्ड स्किन ज़रूरी है। अगर आपने अपने हाथ और टांगें वगैरह कवर की हुई हैं तो वो फिर अल्ट्रा वायलेट रेज वहाँ तक स्किन, वेस्ट में सनस्क्रीन इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो लाइट स्किन रेसेस हैं, तो उनको ज़्यादा सन की वजह से डैमेज भी होता है और स्किन के कैंसर्स भी डेवलप हो जाते हैं। इसलिए उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो सनस्क्रीन लगाते हैं जिससे विटामिन डी प्रोडक्शन हिंडर होती है। दूसरी चीज़ है पुअर डाइटरी इनटेक। ऑल्दो के विटामिन डी वाले फूड बहुत कम है, ज़्यादातर जो फूड है उसमें फिश जो है वो इम्पोर्टेंट है, कॉड लिवर ऑयल वगैरह, मगर हम इस तरह की वेरिएबल डाइट लेने के आदी नहीं है। कराची हालांकि पोर्ट सिटी है, यहाँ पर भी मछली खाने का रवाज इतना ज़्यादा नहीं। डिक्रीज बायोअवेलेबिलिटी जिसमें मैल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर्स वुड बी इम्पोर्टेंट। फिर कुछ मेडिकेशंस हैं विच डू इंटरफेयर विद अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयंस। डिक्रीज सिंथेसिस, अगर कोई लिवर डिजीज़ है या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है तो वो जो दो
हाइड्रोक्सिलेशंस होनी है इनएक्टिव विटामिन डी के एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, वो नहीं हो पाती तो उससे भी डेफिशिएंसी हो जाती। नाउ a little bit about the COVID-19 impact और इसका रिलेशनशिप टू विटामिन डी डेफिशिएंसी। जैसे आबाद ने शुरू में बात की कि लॉकडाउन की वजह से भी हमारा जो एक्सपोजर है, जो रूटीन में कुछ बाहर निकल कर होता था सन को, वो भी कम हो गया। डाइटरी चेंजेस आ गई, घर में बैठे हुए हैं तो बच्चों में तो फिर वो फास्ट फूड ऑर्डर करने का रुझान ज़्यादा होता है। लाइफस्टाइल चेंजेस के घर से बाहर निकलते थे तो कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी हो जाती थी, घर में वो एक्सरसाइज करने का इतना रुझान नहीं होता। और फिर जो काम वगैरह भी हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं उसमें भी बैठे रहे कंप्यूटर के आगे 2-2 4-4 घंटे, तो वो भी एक्टिविटी आपकी कम रही। प्लेग्राउंड्स क्लोज्ड हैं तो बच्चों को खेलने का मौका नहीं मिलता। फिर इस लॉकडाउन की वजह से also affecting the health as a factor in COVID-19 progression, severity and mortality. ये एक पेपर है from Brown and Sarkar. They had studied the COVID-19 virus mortality rates as at 20th March 2020 पे उन्होंने असेस किए थे और ये यूरोपियन कंट्रीज में असेस हुए। उसमें जो उनका कंक्लूजन था कि द एल्डरली एंड दोज विद प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस आर एट ग्रेटर रिस्क, and it was hypothesized that vitamin D deficiency may be significantly compromise respiratory and immune response function. और फिर जो इन्होंने रिजल्ट्स देखे तो उसमें भी जो सिविरिटी इन्फेक्शन की थी वो उन लोगों में ज़्यादा आई जिनको deficiency थी vitamin D की, and ultimately they concluded that vitamin D supplementation may be protective against respiratory conditions in D deficient persons. तो ये recent study है और ये एक तरह से ऑब्जर्वेशन है कि अगर विटामिन डी कम होगी तो जो रिस्पॉन्स है टू इन्फेक्शन वो ऑप्टिमम नहीं होगा। एक और पेपर है ऑन विटामिन डी एंड इम्यून सिस्टम बाय सिंथिया अरानॉय और इन्होंने जो कंक्लूड किया कि विटामिन डी हैज इम्पोर्टेंट फंक्शंस बियॉन्ड दोज ऑफ कैल्शियम एंड बोन हेमोस्टेसिस which include modulation of innate cells of the immune system are capable of synthesizing and responding to vitamin D, and they were of the opinion that again vitamin D would benefit patients who are suffering from COVID-19 infection. So the role of vitamin D in the prevention of coronavirus disease infection and its mortality. This was a paper by Peter Christian et al. And their observations were that mean vitamin D levels for 20 European countries were gathered, and their morbidity and mortality caused by COVID-19 was studied. The mean level of vitamin D averaged 56 nanomoles per liter in each country was strongly associated with number of cases per million. Meaning के अगर विटामिन डी लेवल्स कम थे तो उस कंट्री के अंदर नंबर ऑफ केसेस पर मिलियन ज़्यादा हुए और ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट था। सिमिलरली मोर्टेलिटी भी पर मिलियन उन कंट्रीज़ में ज़्यादा आई। तो
विटामिन डी लेवल्स को उन्होंने कंक्लूड किया कि supplementation would be advisable to protect against SARS-CoV-2 infection. Now, coming to the sources of vitamin D, the most important source would be the exposure to sunlight. And it has been estimated that 5 to 10 minutes of direct exposure to sunlight to arms and legs would provide 3,000 international unit of vitamin D3. As I've already mentioned, the food which is rich in vitamin D includes fish such as salmon and trout. But then there are certain foods which are fortified with vitamin D, such as tofu, yogurt, milk, cereals, etc. Egg is again a good source. So, what is the dietary recommendation for vitamin D? The nutritional advice is that for children, at least 400 international units per day should be provided. Whereas for adults, 600 international units is required. And in old age, it would be at least 800 international units per day. So, how should we manage vitamin D deficiency? As you would recall, deficiency is considered when vitamin D levels are less than 30 nanomoles per liter. So, these calcium levels, it's advisable that they be repeated 1 month after completion of loading dose. Loading dose is a dose of vitamin D that is given either in oral form or by injection. Then lifestyle advice is also to be given to such patients, such as they should have sunlight exposure and they should exercise. No intervention is requested for potentially adverse high levels of vitamin D. Those patients who have insufficiency or who fall in insufficiency group, that is, they have levels between 30 and 50 nanomoles, they would be provided a loading dose of 150,000 international units taken orally over 6 to 10 weeks, whereas the deficiency patients are usually recommended a loading dose of 300 international units for a period of 6 to 10 weeks. The dosing principle would be that you give a loading dose at monthly interval, 2 lakh units or 50,000 international units weekly, and this will be continued for 8 weeks, whereas the maintenance dose would be 2 lakh international units for 8 weeks. And this is to be kept in mind that a maximum dose of 10,000 international units should not be exceeded per day. अगर ओरल फॉर्म में दे रहे हैं तो 10,000 इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा एक दिन में नहीं देना, वरना आप उसको पल्स फॉर्म में दे दें वीकली या मंथली डोजिंग पे. और जो इनसफिशेंसी वाले पेशेंट्स हैं उनको आपने जो कंटिन्यू करना है वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स आप 4 मंथ्स पे वंस ये दीजिए, या अगर आप डेली देना चाहते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन विटामिन डी लेवल्स, अ पेशेंट प्रोफाइल, 600 to 2000 international units daily दिए जा सकते हैं. There are certain special considerations, जैसे अभी बात हुई कि ओल्ड एज में the ladies or gentlemen are likely to fall down, और ये उनका जो कंट्रोल है मस्कुलर कंट्रोल वो भी इफेक्ट हो सकता है. इसलिए
इनके लिए एडवाइजेबल है कि इन्हें अगर 800 इंटरनेशनल यूनिट्स ओरली दिए जाएं रोज़ तो वो बेहतर होगा। इसी तरह जीरियाट्रिक डोज भी कम से कम 800 इंटरनेशनल यूनिट्स देने चाहिए। दूसरी कंसिडरेशन आ जाती है ओरल वर्सेस इंट्रामस्कुलर विटामिन डी रिप्लेसमेंट in apparently healthy adults with vitamin D deficiency. This was a paper from Indian Journal of Endocrinology and Metabolism, and they had concluded that IM cholecalciferol group showed a sustained increase from baseline. मतलब यानी ये अंडरस्टैंडेबल है कि अगर आप ओरल देते हैं तो उसने फिर भी जाके अब्जॉर्ब होना है और वो अब्जॉर्प्शन 100% शायद ना हो, पर जो डोज आपने इंट्रामस्कुलर दे दी वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब्जॉर्ब हो जाएगी। इसलिए probably IM dose would be more beneficial when you are giving it to vitamin D deficiency patients as a loading dose. The question is who should be screened for vitamin D deficiency? Naturally, elderly should be screened. Anyone who's homebound or institutionalized patient, patients with known or suspected malabsorption syndrome, patients with osteoporosis or osteopenia, chronic kidney disease ke patients, chronic liver disease ke patients because they would affect the vitamin D metabolism, patients with non-specific musculoskeletal pain, and patients on medication that induce P450 enzyme activity. Obese में भी screening करनी बेहतर है. Thank you very much for patiently listening to the talk, and if you have any questions, queries, please feel free to ask and I'll try and answer those. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Saab. जी आबाद. थैंक यू सर. आपने जो है वो विटामिन डी डेफिशिएंसी के ऊपर हमारी ऑडियंस को इतनी अच्छी नॉलेज जो है वो अपनी शेयर की, और तमाम ही चीज़ें उसके अंदर जो कि प्रेवलेंस से लेके उसकी मैनेजमेंट तक विटामिन डी डेफिशिएंसी की आपने हमारी ऑडियंस के साथ डिस्कस की. डॉक्टर साहब, कुछ सवालात जो है वो मेरे पास व्हाट्सएप के ऊपर लोगों के आ रहे हैं जो पूछना चाह रहे हैं. अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपसे वो डिस्कस कर लूँ सवाल, क्योंकि हमारे पास टाइम है अभी थोड़ा. जी ज़रूर पूछिए. बिल्कुल. सर, विटामिन डी के हवाले से कि अगर सप्लीमेंटेशन कोई किसी को डॉक्टर देना चाह रहा है तो उसके लिए उसके विटामिन डी लेवल्स करवाना ज़रूरी है, जिस तरह की प्रेवलेंस मौजूद है हमारी सोसाइटी के अंदर. तो अगर बगैर टेस्ट के भी विटामिन डी सप्लीमेंटेशन दी जा रही हो तो उसके कोई नुकसानात हो सकते हैं क्या? जैसे मैंने वो एक पेपर का रेफरेंस दिया जायद मसूद का, जिन्होंने फैसलाबाद में अपना डाटा शेयर किया था, उस लिहाज से तकरीबन 95% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो आइदर डेफिशिएंट है या इनसफिशिएंट ग्रुप में फॉल करती है. तो एज अ रूटीन आप ओरल फॉर्म में दे दें, कोई हर्ज नहीं है, मगर अगर आप बहुत एनालिटिकल होना चाहें, साइंटिफिक बेसिस पे करना चाहें तो उसके बेसलाइन लेवल्स करा लीजिए. उससे फ़ायदा ये होगा कि महीने 2 महीने बाद रिपीट कराएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि डोज चेंज करनी है या मेंटेनेंस डोज पे ले आना है. तो वो मॉनिटरिंग में फ़ायदा देगा, मगर दिया जा सकता है, कोई हर्ज नहीं है. बिल्कुल सही. अच्छा सर, एक सवाल ये भी आया है कि जिस तरह की लॉकडाउन की सिचुएशन है और जिस तरह लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा इनएक्टिव भी हो गई है, फिजिकली भी वो वीक होना शुरू हो गया है, तो इसी तरह इम्यून सिस्टम के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको हम विटामिन डी सप्लीमेंटेशन से कुछ बेहतरी की तरफ कर सकते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी के अलावा कोई और हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन नहीं है फिलहाल इस कोविड से फाइट करने के लिए. सही कहा आपने. कोविड-19 जो पेंडेमिक है, इसके मतलब कभी हमें दिलावर
अभी हमें इतनी नॉलेज भी नहीं है कि हम इसके लिए कोई गाइडलाइंस इस्टेब्लिश कर सकें। जो स्टडीज़ और रिसर्च मैंने शेयर की, इसमें जो बात नज़र आ रही है कि विटामिन डी का बेनिफिशियल इफेक्ट है इन इन्फेक्शंस। उस लिहाज से देखा जाए तो हमें हर पेशेंट को सप्लीमेंट करना चाहिए। उनका कंट्रोल जो है इन्फेक्शन का वो बेहतर हो जाएगा। कैमरे पे लें। तो इसलिए इसको एज देना चाहिए और यही अब एडवाइस भी की जा रही है। मेरे ख्याल में ये करना सही रहेगा। कैमरा लें। Thank you so much, Dr. Saab, for your time in sharing with us the information about vitamin D deficiency and how to cope up with this situation of COVID-19. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। You are welcome जी, बहुत शुक्रिया बात। Thank you, thank you. Thank you.